Kushkira, Urahta Shtara, Shanai, Yir Malapeya, Tushta, Narush, Narita, Nahi.
I cannot I
Namaste to everyone. Namaste. Today we are here. दादा हाल क्या होगा? Oh, nice to see you. Is everyone. Very namaskar to everyone. And जैसे भी हम लोग शुरू करेंगे जो देवी वुम की प्रोसेस है, I will be speaking in Hindi as well as English. तो हिंदी में भी जिनको समझ आ रहा है वो भी बढ़िया, जिनको इंग्लिश में आ रहा है वो भी बहुत बढ़िया. आवाज ठीक नहीं आ रही. Yes, the voice is audible to everyone. सबको आवाज सुन रहा है? टूट कर आ रही है. Yes, माँ. थोड़ी ब्रेक हो रही है माँ. है. Well, मेरी तरफ से तो कुछ ठीक गड़बड़ नहीं है मेरी तरफ से. अभी ठीक है. Yes. अभी ठीक है. Right. Thank you. Thank you. Right. Love you. Masters. अभी आप लोग म्यूट रखें बीच में. तो ना ऐसा है कि जो देवी वुम का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये एक बहुत ही सुंदर अपने आप में सम्मान वापस लाने का. हम लोगों ने जब हम गर्भ की बात करते हैं, पीरियड्स की बात करते हैं, रजस्वला होने की बात करते हैं, तो कहीं पर हम लोगों के अंदर एक इसको लेके शर्म है, दिक्कत है. इस सबसे हटकर ये हमारा क्रिएशन सेंटर है. इस क्रिएशन सेंटर में अगर हम अपने अंदर एक शांति और प्रेम को साथ में लाते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो जो क्रिएशन होगा वो जो है वो बहुत सुंदर है. So today we are going to co-host along. जैसे लारा हमारे साथ में है, तो लारा जो है वो भी हमारे साथ करेंगी. इनिशियल में we will both will be doing. So let us come together. Let us come together to now. जहाँ पे भी आपका ध्यान है, wherever you are scattered, just come back to now. Just allow yourself to collect and come back to now. जहाँ भी, जैसे भी, जहाँ भी फैले हो आप, उसको जैसे साथ में लेकर आप आते जा रहे हो. To now, to this moment. सारी चीजों को छोड़ते जाइए. Come to this moment. Ma'am, sorry to interrupt in between. Your voice is not at all clear. I think there is some issue with your speaker. This side, fine. Yeah, is it okay now? Yeah, it's much better now. तो सभी अपने आप को इस मोमेंट में लाएंगे. Just come back to this moment. एकदम शांत होते जाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरी तरह से कंफर्टेबल, एकदम शांत. Just come back to your center. अपने आप को जैसे अपने दिल के साथ जोड़ते जा रहे हो. कई तरह की चीजें हम लोग फैले होते हैं, घर का काम, ये सब जगह. Just come back to me in this moment. इस क्षण आप सबसे इम्पोर्टेंट हो, सबसे महत्वपूर्ण हो. अपने अंदर के उस देवी के साथ जुड़ते चले.
let us all bring our attention back to ourselves, bringing back our attention to the goddess that is inside. Collect yourself, collect yourself. Come back. Close your eyes. Bring yourself back to now. Bring yourself back to जहाँ भी जो कुछ भी आप सोच रहे हो, चश्मा पहना है तो थोड़ी देर के बाद उतार दीजिए। अपने आप को इसी क्षण में लेके रखिए। हर काम को साइड में कीजिए। जिनको साउंड का दिक्कत आ रहा है वो एक बार और ज्वाइन कीजिए। और रिलैक्स होइए और ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी। अभी आवाज आप सबको कैसी लग रही है? Is it clear now? और ज्यादा शांत होते जाएंगे और रिलैक्स होते जाएंगे। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। हर तरह की डाउट्स को अपने अंदर से निकाल दीजिए। हर तरह की परेशानियों को अपने अंदर से निकाल दीजिए और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा शांत होते जाएंगे। मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको कि अभी आप लोग चैटिंग बंद कर दें और फोकस अपने साथ लेके आए। सारा फोकस अपने अंदर लेके आएंगे, अपने साथ जुड़ते जाएंगे। At present, bring back your attention to yourself. Just collect yourself, come back to now, in this moment. Wherever your attentions are, bring back, collect yourself into now, fully into now. Just allow yourself to fully concentrate and come back to the goddess that is there, who is sitting right within you. Connect fully. Come into the honor of your body. अपने पूरे शरीर के सम्मान में एक देवी के तरह सारा फोकस लाते जाएंगे। बिल्कुल शांत और शांत होते जाएंगे। ज्ञानवती जी, सब कुछ छोड़िए, एकदम शांति से इस समय पे आ जाइए। जो कुछ हो रहा है सब कुछ छोड़ दीजिए, ये समय आपका है। Everyone, just come to now. Leave everything aside. This is the time where you are connecting to the most important being of this world. You. पूरी तरह से शांत। Just observe your incoming and outgoing breath. So exhale and inhale. Just observe.
the normal, natural breath. Breath is the way to connect deeper within us. सिर्फ आती और जाती सांस के साथ हम एक रहेंगे. सांस हमें अपने साथ पूरी तरह जोड़ने में मदद करती है. बिल्कुल पूरी तरह रिलैक्स्ड होते हुए अपने साथ जुड़ते जाएंगे. कुछ इस तरह सांस लेंगे कि जैसे आपके अंदर सांस आ रही है, दिल में महसूस करें और उसे पेट तक जाते हुए महसूस करें. आती हुई सांस पूरी तरह पेट तक जा रही है. Just feel as if you are breathing in up to your abdomen. As you are breathing in, your abdomen is going out, expanding. And as you are breathing out, your abdomen is going back. जैसे आप सांस ले रहे हो, महसूस करो आपका पेट जैसे बाहर की तरफ जा रहा है, फैल रहा है. और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट जैसे पीछे की तरफ जा रहा है. पूरी तरह रिलैक्स्ड, पूरी तरह कंफर्टेबल होते जाए. गहरी शांति अपने अंदर तक. Just relax, just comfortable. और ज्यादा शांति. पूरी तरह शांत, पूरी तरह कंफर्टेबल. Just observe your tranquil, normal, natural breath. एकदम शांत. Come fully to now. बिल्कुल इसी क्षण में, इसी क्षण में आते जाएंगे. सारा ध्यान सिर्फ आती और जाती सांसों पर. गहरी रिलैक्सेशन अपने अंदर तक. आंखें बंद ही रखेंगे. The first step is to connect fully with yourself. जब तक हम अपने साथ पूरी तरह नहीं जुड़े, तब तक हमारे अंदर कहीं गहरे दबा जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो बाहर नहीं समझ आएगी. Until we connect deeply within, it is difficult to touch the inner core. The core which is beautiful, yet due to different situations, it is holding a lot of fear, pain, and hurt. अपने आप से और जुड़ते जाएंगे. हमारे ही अंदर बहुत सारा डर भी है, दुख भी है और शर्म भी है अपने आप को लेकर. पूरी तरह से जब हम अपने साथ जुड़ते जाएंगे, तभी हम अपने आप को सही मायने
पहचान पाएंगे और हील कर पाएंगे। Only when we are connected fully to ourselves, only then we can heal ourselves. So drop everything. Just connect fully. It is very much important for all of us to connect to the energy of the workshop. There might be some words which you might understand, which you may not. But if you connect fully with the energy, the work will be done meticulously. ये बहुत आवश्यक है कि हम इस वर्कशॉप की ऊर्जा के साथ पूरी तरह जुड़े। कुछ शब्द आपको समझ भी आएंगे, कुछ शायद नहीं आएंगे, पर अगर आप इसकी ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे तो जो गहरी हीलिंग और जो गहरा काम है वो होगा। हम सबको याद रखना है मास्टर्स कि यूनिवर्स की जो भाषा है वो ऊर्जा है, वो चेतना है। पूरी तरह से अपने आप को देवी वोम की ऊर्जा और उसकी चेतना के साथ जोड़ते चलेंगे। We all need to remember that the universal language of this universe is energy and consciousness. So let us all connect to the energy and consciousness of this beautiful workshop of Devi Womb. There will be lot of Bij mantras, the basic primordial sound systems, but just holds the energy. You just need to connect to that energy. बहुत सारे ऐसे आवाजें और शब्द इस काम में आएंगी, इस वर्कशॉप में उत्पन्न होंगी जो सिर्फ बीज मंत्र की तरह है, जिसका अर्थ नहीं है। उसकी ऊर्जा और उसकी चेतना के साथ हमें जुड़ना है। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स होते जाएंगे, एकदम शांत, fully ready to move along with the energies of the Devi. Just connect fully, calming ourselves fully to now, to this moment. एकदम शांत, अपने पूरे शरीर में एक जो वाइब्रेशन मूव कर रहा है उसके साथ जुड़ते चलेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होते चलेंगे, एकदम शांत होते चलेंगे। Fully connect, fully connect. If we increase the confidence concentration, it will move back, so more express is used, hence the pH will go back down. अभी हमें लारा आगे का प्रोसेस करवाएंगे। जो भी एनर्जी के मूवमेंट्स वो बता रही हैं उनके साथ हम जुड़ते चलेंगे
और वो मूवमेंट अपने शरीर में होने देंगे, जिससे हम और ज्यादा कनेक्ट कर सकते। Yes, Lara. Good evening. So I didn't hear acoustically. Champa, can you just repeat? Are we introducing ourselves or after your beautiful meditation? बिल्कुल शांत होते चले और ज्यादा डीपली रिलैक्स्ड होंगे। गहरी शांति से अपने आप को महसूस करते चलेंगे। Just start feeling yourself fully. Connecting yourself fully. So is it my Champa? I didn't hear Please, you. Lara, your voice little need to be raised a little. Yes, My voice okay? it's little less audible. Okay, because I couldn't understand you acoustically, so I don't know, are we introducing ourselves right now? Or are we after your beautiful meditation? So I would like to welcome all of you. I'm Lara Moira. You hear me? Yeah. So I'm Lara Moiradana from Austria, Europe, and I'm here together with Champa to guide you through these 3 days of the goddess Maria Magdalena and the goddess of love, of sacred sexuality, and of life force and the moon blood. And I hope you can all clearly understand. I'm speaking English now and trying to get into our first part of the Devi womb. So I'm very happy and honored to be here and hope you hear me now. I am on this path of the goddess since 22 years with Maria Magdalena. And as a high priestess and shamanic midwife, I'm guiding women through their birthing and dying process in this life. I'm guiding them through their womb healings and rebirthing themselves. And tonight, we're gonna start to take you on a journey with the goddess to the source of it all, like the womb, the organ in the woman's body that is representing the universe, the black hole, the sacred temple, and represented by the goddess of all the archetypes, which is the red goddess we call in Europe. You might
hear some words or wordings that I use that we have here from our European tradition. Goes back to the root language, which is the root of it all. It's the sound. So if you don't understand the word I'm using, I just invite you to close your eyes and listen to the sound and the rhythm of my words. And this is one very important thing related to the goddess, is to really feel the sacred sexuality, to feel the womb, to feel the feminine power, the divine feminine in the sound she makes. And the root language is used by the high priestesses of Maria Magdalena, this goddess, to return to our power, to our strength, and to our full health in the womb. Womb, the name womb, is also a root language word that has a divine sound. So if I talk about areas of our body or breathing or body exercises, I don't use Latin words so much because they are not from the root language and they disconnect us from our womb energy, from the divine source of the goddess. And this goddess has many names. We have many traditions, and Shampa will maybe later on relate my names to your names in India, to the Vedic tradition. But here in Europe, we call her Maria Magdalena, or Mary Magdalene in English, but she has the sound of the ma and the ma. We will go to that later on. And she has also the name of Freya, free. A, the free A, is the one who is free, absolutely free in her power, in her life, in her divine mission. And also Venus and Aphrodite are names of the red goddess. But most important than the names is the red, the color red, because it represents the moon blood. The moon blood every woman has when she comes into her fertile time of her life. And this is very important to relate what happened in patriarchy over the last centuries. Because the moon blood, and it's also a root language word with a divine sound, is the moon with two O's that we can tone together later, but also the blood with the two O's, and it's very important for this divine source of the goddess. And as the moon blood with the red color has been shamed and blamed and put on a lot of guilt on it, women started to disconnect from their own body, but especially from their own moon blood. And the moon blood, we also know it in English as menstruation, which is a Latin word, but moon blood is the one that the woman is offering to Mother Earth and to the universe and to the goddess every month. And we have this trinity of the white, the red, and the black goddess, where the white one is the young, virgin, pure one that is not bleeding yet. And she's transforming when time is ready, in time of puberty. She's transforming into the red goddess. And the red goddess then is the one to be a mother, the one to be in her full mission, business, work, in love, in health, in wealth. All these big issues of life are in this area of the red goddess. Also abundance. The issue, the topic of abundance, the big field of abundance is the one of the red goddess, as we know it here in Europe. And once the woman stops bleeding,
she transforms into the Black Goddess. So here we have this Trinity, very holy Trinity, that every woman passes through and transforms in one life. But there are two other aspects which I'd like to bring in, is the fourth and the fifth element, so to speak. It's very interesting to relate it to those three elements we know here in our mankind. We work with that, but the fourth and the fifth element are the silver and the gold goddess, which is the moon and the sun. And if all these aspects work together in balance, the red goddess is in the middle of it all. So she's the center, the core of this transformation. And the moon blood was the most sacred blessing in old times, in ancient times, for all these big transformation rituals, for birthing, for dying, for everything in between. So it's been used as a high frequent medicine. It was a blessing to have the moon blood around. During patriarchy, it was blamed and shamed and put on a lot of guilt and dirt. So many women today feel dirty around their moon time. They were made dirty in this. And of course, this one is the pure, virgin, absolutely innocent life force of the goddess, which makes you fertile and makes you abundant. And if you blame and shame this beautiful medicine, this high frequent medicine, you will blame, after a while, your organ, the womb. The beautiful sacred temple will be dirty all of a sudden. It will be dirty, it will be guilty, it will be shamed and blamed. And it's gonna widen into your whole body. The whole cells of your body will be influenced by this shame and blame. And so we know all kinds of disease and processes gonna start in your body. So let's go back to this beautiful center of our body, of a woman's body, which is the womb. And let's enter the sacred temple together these 3 days in a new way. I would love to invite you to several journeys, shamanic journeys, energetic meditation journeys into the womb to restructure this beautiful, sacred source. थैंक यू लारा। मैं भी हिंदी में आप सबको बताती हूँ। लारा जी ने जो बताया वो कुछ इस तरह से है कि जो हमारा वूम है, जो हमारा गर्भ है, उसकी जो ऊर्जा है वो आज से नहीं, बहुत समय से इसका अपना ही एक सम्मान है, इसकी अपनी ही एक जगह है। अलग अलग नामों से हम इन्हें जानते हैं, जैसे कि अभी हम लोग नाम ले रहे हैं मेरी मैगडलेन, जिसको हम इंग्लिश में मेरी मैगडलेन बोलते हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है वो है मारिया मैगडलेना। और इसको माँ करके हम जो माँ की ऊर्जा है उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नाम है। एफ्रोडाइट अलग अलग जगह में धरती माँ के साथ ये कनेक्टेड है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है, ये मेंस्ट्रुएशन का मतलब ही होता है कि मून ब्लड, यानी कि जो चंद्रमा है उसके साथ आप देखते हैं चंद्रमा का साइकिल जैसे 28 दिन का होता है, हमारा भी 28 दिन का होता है। तो ये 28 दिन का जो साइकिल है, ये जो खून हमारा है, ये मून ब्लड कहलाता है। और ये अपने आप में एक जैसे पहले हम जानते हैं कि जो लेडीज थी, जो औरतें थी, वो डायरेक्टली जो उनका ब्लड होता था वो सीधा धरती में जाता था और वो धरती को उपजाऊ बनाता है, वो एक तरह से सम्मान है। पर एक समय धीरे धीरे कुछ ऐसा आया कि हम अपने ही इस खून के साथ हमें ये अपवित्र लगने लगा, हमें ये गलत लगने लगा। और ये गलत लगने की भावना जैसे जैसे हम अपने गर्भ में लाते हैं तो क्या होता है, वहाँ बीमारियां हम शुरू करते हैं। हमारे क्रिएटिव सेंटर में हम जब इस तरह की बातें लेके आते हैं तब तरह तरह की बीमारियां, जो एक क्रिएशन सेंटर है, आप कुछ सोचे, जो जगत को बनाता है, हम लोग भारतीय परंपरा अनुसार ये नाम है जगत धात्री का।
पूरे जगत को पकड़ के रखने वाले उनकी माँ के रूप में। तो जब हम उस स्वरूप का अपमान करते हैं, तब हम अपने अंदर ही कई तरह के बीमारियों को ले आते हैं। जो उनका अबंडेंस है, जो पूरे संसार को पाने का, जो हमारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम परेशान होते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कमी की भावना इसीलिए आती है क्योंकि कहीं हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं गलत समझकर। तो अभी समय है कि हम वो सारे जो भी शर्म, जो हम लोगों ने गलत है, गंदा है, ये सारी भावनाएँ हमने अपने गर्भ में ली हैं, उसको हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे। लारा हमें आगे का बताएंगी। थैंक यू लारा। Okay, do you hear me? Yeah. Okay. So I would like a first little body work to feel into our bodies and wounds, but before just to focus again on this blood I mentioned, which is not the ordinary blood in our body, but the moon blood from the womb. And this high frequent one was used just to know related if we've been doing a really important blessing of life and death. In ancient times, we would call it bless you or blood you. And this blood you, bless you, blessing, the word in the root language comes from this moon blood, from this high frequent medicine. So just to bring this awareness to what it really is, how high frequent, how healing, how divine this is, and how where we stand at now. So I would ask you in this exercise we're going to do now that you really feel into your body, into your cells, if you can feel that shame, blame, guilt, story and pattern somewhere in your body, especially in your womb, around sacred sexuality, everything around fertility, birthing, and sexuality. And very important, another part is the creation. We have this divine creation, or creation is divine. And then we have the counterpart of it is production. And both are sometimes misunderstood as the same thing. But to make clear for the womb healing, the production is something of mankind. Humans have been kind of establishing production. They are producing something, which is absolutely okay. But creation is from divine source and is happening. It's just fate. So it has to happen. And birthing process and the moon blood and everything around the womb in the sacred temple of a woman's body is creation and not production. So once the patriarchy would isolate us from our source and we would agree with it and allow it to happen. And so we separate from this divine source, we don't feel the creation anymore, and we are producing, and this is rising the stress in ourselves, in our body, in our mind, and everything. So we've been splitting up the divine masculine and feminine inside of us, and we need both of them for the red goddess to really function, but even more than function, to really flow and heal and be divine. So this would be a beautiful impulse to do right now. If you want to join me to do a little body work, that you sit down in a comfortable position and really good grounded with your roots, with your Hara chakra. And then please put your hands on your knees to connect with both knees. And if you like, you can now close your eyes and go into deep breathing. Champa, is it needed to translate or is it okay? हम लोगों का अब तक ऐसा हुआ है कि औरतों को प्रोडक्शन का मशीन बना दिया गया है कि आपको लड़का पैदा करना है या आपको लड़की पैदा करना है।
तो जब तक इस तरह का रहेगा, तो जो हमारे पैट्रियार्की का रहा है, जो पुरुष प्रधान समाज का रूल रहा है कि औरतों को इसलिए लाया जा रहा है कि वो लड़का पैदा करके दे, वंश बना के दे, तो इससे कहीं हम लोगों ने जो हमारे अंदर एक डिवाइन क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो सृजनात्मकता है, उससे हम दूर हो गए हैं। जो हमारे अंदर जो एक अद्भुत सृजनात्मकता शक्ति है, जो देवी शक्ति है, हमें आज उसके साथ चलना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, दिखने में हमारा जो एक शरीर है, जो दिखने में एक महिला का शरीर है, लेकिन हम सबका शरीर जो है वो दोनों ही रहता है, उसमें पुरुष भी रहता है, महिला जो है भाव, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही रहता है हमारे अंदर। तो उनको अपने अंदर हम एक बैलेंस के रूप में लाएंगे। तो उसके लिए लारा हम लोगों को एक फिजिकल एक मूवमेंट के साथ हम अपने साथ कनेक्ट करेंगे। आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो शर्म रहती है, जो दोषारोपण रहता है, अपने आप को बुरा मानने वाली जो बातें हमारे गर्भ के साथ हैं, अब वहां पर हम उस शरीर के उन सभी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते जाएंगे और उनको क्लियर करते जाएंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़े। नारा आगे So very important for this exercise now really is for you to really open your legs wide, open wide. It's really important to become aware of any shame and blame and guilt in your womb place. So first of all, you can maybe put your hands also on here in the triangle, or you can put your hands on your knees and just start while I'm talking, start circling. You turn left with your hips and your belly. And just turning left, not going right, just turning left, because the left wise circling is the one for the goddess to dissolve everything she doesn't need anymore. Everything that is not serving, is unhealthy, is toxic in your body, especially around your sexuality and your womb. Yes. Yes, Masters, जो अभी सभी थोड़ी देर के लिए आंखें खोलेंगे और ध्यान से लारा को देखेंगे कि कैसे लारा दिखा रही है, अपने शरीर को कैसे मूव करना है, क्योंकि अभी हम अपने शरीर के साथ जुड़ रहे हैं। कैसे करना है उन्होंने बताया। अब चाहे तो इस तरह का ट्रायंगल बनाकर जो हमारे नीचे की योनि के पास की जगह है, उसके पास एकदम नीचे जो हमारा ओवरी की जगह है, वहां पर हम लोग रख सकते हैं या घुटनों पर हाथ रख सकते हैं। अपने पैरों को हम लोगों ने, हाँ प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अपने गर्भों को और ज्यादा सम्मान देंगे। ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग कुछ भी ज्यादा जोर से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल ना घबराएं, एकदम आराम से सभी करेंगे। अपने शरीर को अभी हम बाईं तरफ से गोल गोल घुमाएंगे, अपने साथ जुड़ रहे हैं, अपने अंदर के जो स्त्री तत्व है उससे हम जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से, एकदम रिलैक्स्ड होकर। Even if you are pregnant, you can do. Please don't worry. So keep on circling with your hips and your belly, left-wise, either here or with your hands, and really open up. And while you open up, and you close your eyes, and go into deep breathing, and every time you breathe in and out, feel your womb, connect with your womb, with the center of the goddess inside of you, and feel, really feel, not thinking, what is there? Do you feel any blame, any shame, any guilt? Do you feel dirty while opening up your legs? And this sensual feeling that could be there in the womb and in the yoni, in the Hara chakra, is only if you can really be free of shame and blame and guilt. You can really
be free of all these old patterns and patriarchal systems. So this is what we're going to work now these days, to free ourselves from old stuff. अपने पैरों को फैला लीजिए, पैरों को फैला के जैसे अपने आप को निचले पूरे भाग में खोलने दीजिए और फिर आप ये पूरा मूवमेंट बाईं तरफ से दाईं की तरफ, ये पूरा बाईं की तरफ से घूम रहे हैं और अपने आप को खुलने दीजिए। जितना आप अपने आप को खुलने देंगे, आपके अंदर दबा हुआ शर्म, अपने आप को गलत समझना, जो भी है वो सारा उसको निकलने दीजिए। पूरी तरह से खुले, जिस तरह से लारा अपने शरीर को दिखा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, यस, लेफ्ट की तरफ हमारा शरीर, लेफ्ट टू राइट, यस। Perfect. Yes. So keep on turning, keep on circling, keep on feeling what is there right here, right now in your womb. इस पूरे प्रोसेस में महसूस करना बहुत जरूरी है। पूरे तरह से अपने शरीर को महसूस कीजिए, क्या हो रहा है, किस तरह की भावनाएं आ रही हैं। Very important part of the sacred sexuality and an aspect of the goddess. The nature of their body. The symbol of the snake and the dragon. And this is connected to your tongue, in your mouth. Because there is another sacred temple, the upper temple as we call it, as from Maria Magdalena, is the mouth with the tongue. And the tongue, as we know it from the goddess Kali, is very important to release any shame and blame. Every child does it in an innocent way. If you feel shame, you just make you breathe in and you make then you breathe out and you keep on circling with your hips. पूरी तरह महसूस करेंगे सभी। यहाँ पर जैसे आप अपने आप को गोल गोल पूरा से घुमा रहे हैं, अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो हमारी जो जीवा है वो भी एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। तो जैसे ही अपने लिए आपको कोई शर्म की बात आती है, महसूस करते हैं, तो जैसे देवी काली है, महाकाली है, उस तरह से पूरे करते हुए जीभ को बाहर निकाले, अपने अंदर की शर्म को बाहर निकालते हैं, अपने आप को जो भी रुका हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। So we are already in a birthing process. We don't need to birth a baby, a human baby, to do a birthing, because with the womb, we are birthing all kinds of things. We are birthing relationships, we are birthing health, we are birthing abundance, beautiful jobs, beauty, everything is born out of the womb. And you decide what it's going to be. But first, you have to release blame, shame, and guilt, everything that is toxic in your belly. And this you can do by circling leftwise and using your tongue, because now you're activating the snake, the dragon inside of you. Okay, yeah, this is in the book also. Okay. This is in the book also. And also really loosen your jaw. This is very important for birthing, so that this is representing in your upper temple, the mouth, with your jaw. Is representing the womb with your hips. And if you want to open up here, to really be free from toxic stuff of your past, then you need also to relax your jaw. And that's every woman that is really birthing a baby needs to really do, to really open up fully in her yoni. So just try it for another moment. Close your eyes, deep breathing. And every time some feelings of thoughts of shame and blame from your past come up, you just open your mouth and release it.
So now we add something else. We take our hands and we're gonna now do a cleansing of the womb and then a releasing. So for the first exercise, we are still circling our hips the whole time, left-wise. We take our hands and put our thumb, make a fist. Put the thumb inside. Maybe Shampa, you can explain what this means for the universe. And we put it here. We hold our womb while we are circling with our fists. मैसेज अपने दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उनको अंदर लीजिए, ऐसे बंद कीजिए और इस तरह से ये क्या कर रहे हैं हम पूरी तरह से अपने अंदर की शक्ति को अपने साथ ले रहे हैं और इसको हम जैसे लारा दिखा रही है हमारे निचले पेट की तरफ इसको रखें और जैसे हम घूम रहे हैं हमारी उस तरह से लेफ्ट की तरफ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घूमते जाएंगे। उर्वशी जी बिल्कुल मत घबराइए, कोई भी ऐसी परेशानी के साथ न जुड़े, आप सिर्फ फोकस अपने साथ रखें, पूरी तरह से फोकस अपने साथ रखें और अपने आप को पूरे रिलीज करें हर तरह की शर्म से, हर तरह की परेशानी से। और जहां भी ब्लेम की बात आ रही है, शर्म की बात आ रही है, तो अपने जबड़ों को हम ढीला करेंगे क्योंकि जबड़े जो हैं वो भी हमारे अंदर रुकावट करती हैं। तो जबड़ों को हम ढीला करने के लिए एक तरीका है कि हम महाकाली की तरह जीभ निकालें और साथ में अपने जबड़ों को हिलाकर पूरा ढीला कर दें। पूरा ढीला करते चलें, मूवमेंट करते चलें। इसमें आप चिंता ना करें, डिनर भी जो है वो बहुत हेवी नहीं होगा, या अगर हुआ भी तो ये कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह से करते जाएंगे। हम बाईं तरफ अपने घूमते चल रहे हैं। It's more of anti-clockwise. So now I'll do a little sound of the goddess Maria Magdalena, the the mama of it all, of the womb. And you can just close your eyes, keep on circling with your hips leftwise and holding your fist onto your belly, like holding it. And now this exercise is about really bringing up the shame, the blame, and the guilt in your body, in your womb, and releasing it, letting go of shame, blame, guilt in your life, in your relationships, in your work, in your mission, whatever you are walking on this planet. I call on the sacred divine goddess Maria Magdalena, Ma. I call on you as above, so below, as inside, as outside. And the north to the south, from the east to the west. I call on you to be within us, right here, and right now.
ma, ma. Keep on circling, keep on holding the breath, and keep on releasing any stress, any blame, any shame, and then heal yourself. I unfold myself. I unwind myself. I unbind myself. I unstructure myself. I unwind myself. I unbind myself. I unfold myself. And I unstructure myself. And if you feel like you can join me with this kind of mantra from Maria Magdalena to release and free your womb from the past. You can use your arms and open up now your fists until you're open. अपने हाथों को फैला लीजिए जिस तरह लारा करा रही है उस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह अनवाइंड यानी खुलने दीजिए जो हमने अपने आप को बांधा है उससे खुलने दीजिए पूरी तरह शरीर को खुलने दीजिए ये जो मंत्र बीज मंत्र की तरह ऊर्जाएं आ रही हैं उससे अपने आप को और खुलने दीजिए बॉडी को पूरा महसूस कीजिए पूरे शरीर में पूरे हाथों को मूव कराते हुए अपने आप को खुलने दीजिए खुलने दीजिए खुलने दीजिए पूरे शरीर को पूरी तरह से हाथों को घुमाते हुए अपने आप को पूरे शरीर को पेट को जो निचला शरीर है उसे पूरा घुमाते हुए अपने आप को और ज्यादा खुलने दीजिए Okay. I unwind myself. I unbind myself. I unfold myself. And I unstructure myself. I unwind myself. I unbind myself. I unfold myself. And I unstructure myself.
I unwind myself, I unbind myself, I unfold myself, I unstructure myself, I unwind myself, I unbind myself, I unfold myself, I unstructure myself, and I unwind myself, I unbind myself, I unfold myself, and I unstructure myself, and I rewind myself, and I rebind myself, and I refold myself, and I restructure myself. Hmm. So before we're going to do a little sharing, how you feel about your shame, blame, guilt release, releasing stress out of your womb, out of your cells, you just go into a great goddess position from here, which was feeling safe and releasing old stuff. You go into the fully aligned goddess, open your arms towards, upwards, and open your hands now. You really feel the Shakti energy, the dragon energy, the serpent, snake energy rising from your womb into your arms, and open your heart fully upwards, the divine. जो अभी तक हमारा बंधा हुआ एनर्जी था, उसको हमने इस तरह के मूवमेंट से खोला. हमारे अंदर जो बंधा हुआ, रुका हुआ जो एनर्जी था, उसको हमने पूरी तरह से चेंज किया. हमारे अंदर जैसे ड्रैगन की तरह एक जो कुंडलिनी, जो देवी नाग की तरह शक्ति है, उसको हम पूरी तरह से खुलने दे रहे हैं. उसको पूरी तरह से जैसे अपने अंदर से खुलते हुए, पूरी तरह हमने जैसे मूवमेंट किया, खुलते हुए अपने हाथों को हम खोलकर पूरा अपने हाथों को फैला ले रहे हैं. जो नीचे से ऊर्जा है वो जैसे ऊपर तक आते हुए ऊपर तक फैलती जा रही है. अपने आप को ऐसे अलाउ करेंगे हाथों को खोलते हुए. एनर्जीज को पूरे नीचे से ऊपर तक जो बंधा हुआ, रुका हुआ शर्म की ऊर्जा थी, उसको पूरी तरह से निकालते हुए एक नए तरीके से, एकदम नए तरीके से अपने आप को खोलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं. हम पैरों को आप घुटने मोड़कर बैठ सकते हैं, पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं. बिल्कुल मेन अपने आप को समझें कि जो कि आपके अंदर की रुकावट, उस ऊर्जा को खोलकर आपको खुलना है. क्योंकि देवी जो है, जो शक्ति है, उसे हम बांध के नहीं रख सकते. जो कुंडलिनी शक्ति है, उसे ऊपर उठना है, उसे अपने दिव्यता में आना है, उसे खोली. हाँ, ये जो दर्द हो रहा है, यही बता रही हैं, ये रिलीज का है साइन. तो रिलीज कीजिए, अपने अंदर से सबको रिलीज कीजिए. Whatever pain is coming, just release. Just unwind yourself. So really feel now the relief of all these past emotions and situations in your life, maybe of lifetimes, and become the goddess herself, raising her dragon energy up into the sky and still being super good, well rooted and grounded down with your Hara chakra. So you really been activating your hips, your belly, your womb, and you're fully connected to Mother Earth, to the ground. And with this grounding, you feel safe to open up for your life, your purpose, your mission,
and the divine source to reconnect with the goddess. अपने आप को जैसे हमारे पैर हैं वो जैसे हमारी धरती माँ से हमें पूरा जोड़ रहे हैं। हमारी जो ऊर्जाएं हैं हमारे हिप्स को हम जो हमारी कमर है हमारे हिप्स को आप घुमाएं अपने साथ में पेट को भी। और ये जो ऊर्जा है जो बंधी हुई ऊर्जा शर्म की, दुख की, दर्द की, उसको जैसे खोल कर उस दिव्य शक्ति के साथ एक हो जाएंगे। हम अपने हाथों को फैलाते हुए पूरी तरह से उस तेजोमय शक्ति में आते जाएंगे। जैसे उबासी आ रही है, दर्द हो रहा है, उसे निकल लेंगे, अपने इस तेजोमय रूप में आते जाएंगे, पूरी तरह से धरती माँ से जुड़े हुए अपनी जो दिव्य स्त्री तत्व है उससे पूरी तरह जुड़ते हुए, कनेक्टिंग फुल्ली टू योर डिवाइन एनर्जीज। अपने कमर को पूरा हिलाइए, पीठ को हिलाइए और जो ऊर्जा है उसके मूवमेंट को अपने अंदर से बहते हुए अपने हाथों से फैलते हुए महसूस करेंगे। पूरा शरीर देखें एकदम ढीला छोड़ दिया है हमने। It's good to feel your tension in your arms of your muscles, to feel to really activate your cells. In this is strengthening your heart chakra too. And for this heart chakra to really open up, to spread out the love and the sacred divine source of the womb, we can make a chant, we can tone the ah as the root language sound of the ah, or in English we say a, but it's really like ma from Maria Magdalena is the ah. It's opening up with an ah, or you can do another sound. Choose which you like better or which resonates to you is the ug. It's a very old sound of the tree of life. And like this, we become the tree of life in our own life. We become the life force. So it's either you can tone the or you can tone ug, 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 ug. And with this, you see my belly moving. You can really push your belly in and out and pump the Shakti energy up into your arms to spread out the love of the divine force. Ug, 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 ug. ये जैसे अभी लारा ने दिखाया वैसे ही आप लोग पूरा करेंगे लारा जी का जैसे था। तो कैसे पेट से उन्होंने अपने अंदर से वाइब्रेशन करके अपने आप को ढीला छोड़ा। ये जो एक साइड में दर्द हो रहा है, एक इधर हो रहा है, ये हमारे अंदर के इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, इस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करते चले। Isla, should we proceed for the sharing or how we want? जो भी शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयरिंग में आ सकते हैं। हैंड रेज करें जो शेयर करना चाहते हैं। जो हीट निकल रहा है ये रिलीज है, होने दें अपने आप को। जो दर्द भी हो रहा है थोड़ी देर आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा रिलीज हो सके। Hello, ma'am. हेलो, या प्लीज शेयर। Thank you. Thank you so much. I feel very light.
Thank you. Nice to see you. Thank you, Lara ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. I love you. Atmandan ma'am. Hello, Lara. Hello. Hello. Can you hear me, ma'am? Yes, can you raise your Atmandan ma'am. Atmandan ma'am. Hello, Lara. मैम मेरे को कभी भी गिल्ट और ये सब तो कभी नहीं फील हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे वो जो हमारी सोसाइटी में चलता है ना कि भगवान के मंदिर नहीं जाना है, पानी को नहीं छूना है और आपको अचार नहीं छूना है। वो जो रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे वो जो पीरियड में अभी मतलब मेरे ससुराल में भी चलता है, मायके में भी चलता है कि वो 4 दिन आपको किचन में एंट्री नहीं है, आपको छू नहीं सकते हैं। उसके से वो गुस्सा बहुत ज्यादा रहा है मेरे को, मतलब उसमें ना रिवोल्ट करने का मन करता था हमेशा से। यार अब तो सब साइड कर लिया क्योंकि लगा, और मेरे को वो सब बहुत खोखला लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सब हमारे कंफर्ट के हिसाब से नियम बन गए हैं सारे। जबकि ठीक है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है तो समझ में आता है कि वो मतलब उसको डेली लाइफ से ऐसे जोड़ दिया गया ताकि हमको आराम मिल सके वो सब। लेकिन फिर भी लगता है कि भगवान की पूजा करने से क्या मनाही है, वो क्यों मना करते, तो उसके से गुस्सा बहुत, इसको लेकर मुझे गिल्ट, ब्लेम, शेम ये तो कभी नहीं फील हुआ। बस गुस्सा बहुत ज्यादा रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन मैंने इसको बहुत टाइम तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे मतलब बैक में हमेशा पेन भी रहा है इसकी वजह से। मैंने दवाइयां खा खा के अपना काम चलाती थी। इनफैक्ट फर्स्ट डिलीवरी के बाद मेरा पेन होना बंद हुआ, तो आई हैव नेवर एक्सेप्टेड इन काइंड ऑफ, मतलब इस चीज को ऐसा रहा है मेरे साथ। गुड, आपने आज रिलीज किया। हाँ मैम, अच्छा लगा। इनफैक्ट कहते थोड़ा सा एनर्जी वाला आ रहा था, दो स्क्रीमिंग वगैरह वैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ एक हल्का सा कहीं एक सैडनेस वाली फीलिंग आई, और एक मतलब कहना चाहिए ना कि हमारी आवाज भरभरा जाती है जब हम इमोशनल हो जाते हैं, वैसा वाला फीलिंग था मतलब। So basically, Shweta, her name is actually Shweta. So she is saying that basically she didn't feel any guilt or shame any time in her life, but she was very angry that why she is barred to enter or do stuffs when she is in period. She was not allowed to go to temples, not allowed to do and touch the pickles and a lot of other things. So there was a lot of anger within her, and she constantly had back pain, and it subsided only after giving birth. So this is such a beautiful gesture, that when she gave birth, the clearance happened, and therefore the pain subsided. It's so beautiful. Right. I never thought that way. Yes. Yes, thank you, Shweta ji, for sharing. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Yes. Yes, Urvashi ji, unmute कीजिए. Hello, ma'am. Great gratitude from my side to you and Lara ma'am as well. I didn't know that it would be such kind of an exercise or a practice, but when it started, I was completely into it. I mean, I completely got in sync with the rhythm and the movement. And in the end, when Lara ma'am asked to raise your hand and make such sounds like ma, or something, but I uh, even before she started saying that, I got a sound like a roaring or a dragon kind of sound from my core, and it was actually sounding like a roar, and I was completely into it. Although I had a upper body, my shoulder ache, and because of some exercise I was having a body ache, and I could not raise my hand. So I was taking a back rest and was doing it, but I could feel that roar inside was coming out, and I was fearing that somebody outside my room can hear that what is happening inside, who is roaring inside. I was in that kind of impression.
So, yeah, I do have a menstrual pain right from childhood. It is very severe. I used to have a hot water bag, and when I used to go to office, I always have to have take pills without which I cannot step out. But ever since I'm at home, I stopped taking pills, but the hot water bag is still continued. So I don't know, and I do have a white discharge issue from childhood as well, and I don't know what to do with that. I hope probably with this workshop that will also get subside or get healed. But I do have few days in a month I have white discharge as well, and that was a childhood issue. So I don't know whether it's a major issue or something. But yes, I practiced this, and I was surprised to hear that roaring sound coming out of my core. And I'm too grateful, too thankful to you and Lara ma'am. But just want to know that what exactly it is and whether my this particular issue will get healed with the discharge and everything. Yes, Lara, would you like to answer her, please? Thank you for sharing. That's very common for women. What you told us now, what you've been sharing, many women have these issues. And yes, it is definitely located in your womb. And everything that we did right now felt maybe just a simple thing to do is to release that stress in the womb, because we have many things to relieve stress in the whole body, but we are never so much focusing on the womb. But if you can do this and you do this exercise again and again, first the one where you really just circling and observing yourself where the shame and blame is coming from and releasing it, not holding on to. And then going really, as you said, it's so beautiful to hear that with the roaring, because when I guide women through birth and they are birthing a baby, if they go really ecstatically into the energy of the goddess, they start roaring and all kind of sounds that we've been doing now. So this is what it's about, is really to free yourself with that sound. As I said at the beginning, it's the sound of the root language, the sound of the goddess is not a language, it's a sound, it's a rhythm. And if you can relate to that, if you can return to your inner source, where this sound is coming from, then you won't be afraid of roaring outside, you know, and no one will be afraid of you. It's going to be beautiful. It's going to be ecstatically. It's life force. So this is it, you know, just with this move, you can just, after circling and releasing, you should have the time to stop this and just go into the process of fully opening up for life, for the beauty of life, for the beauty of the divine source, and that you are here and right now, and then really making a sound. That's really beautiful. So you did it. You're on the way. Thank you so much for sharing. Thank you, ma'am. So it should be done every day or how frequently? Frequently, of course. I mean, you can do it every day, like you know, doing a healing process over a few weeks. But if you like, you can also just do it if you have Weekly. you know, if you have a strange situation, a weird situation in work or in relationship or somewhere, and you feel kind of made wrong, then you do this exercise and release it. Okay. All right. Thank you so much. A Don't stop. divine gratitude to you. Don't stop working. Thank you. Yes, Indira ji, unmute कीजिए. Thank you so much, Shampaji, Lara. Thank you, thank you, thank you. I don't know how much I felt so good about the whole process. It was, in fact, I never thought in this angle about the womb and the shame and fame you talked about.
And the other lady, the first lady who said about the tradition in our homes, that was the main reason I feel that we always shame that this is not right. And we had to be separate from the other people in the house and sit separately, cannot touch anything, cannot see any gods. I mean, like temple, go to temple, or touch, even touch my own stuff. So I mean, like we all four of the sisters used to sit separate, had to sleep on the floor, and no pillows, because if we touch, that has to be washed again. So we never had to, I mean, we were never allowed to take a shower. And inside you feel so yucky. I mean, like, I don't know how the feeling was so bad, terribly bad for the whole 4 days. And and those times you need to have like a clean up the whole body all the time. But we were not allowed. Like, we were we were in the darkness. You have to sit in the dark room, and the food they used to allow us, they used to bring in a plate to be served, and I had to wash my own plate and keep it separate. I mean, those were kind of a restricted culture and tradition we followed throughout our life, like until I got married. And I used to think, if I get married, I don't have to do all that. I can have shower every day. It's not dirty or something. That is natural for a woman, right? But we were taught the other side. I mean, like the negative side, I can say. I don't know why they were not allowed so many things. But this exercise you gave, I'm going to do it every day, because this gave me so much of calmness in the body. And I felt like full muscles in the bottom, like my first two chakras, the Muladhara and the Swadhisthana. Swadhisthana chakra are getting cleansed. Something was happening there in this, especially in the second chakra, Swadhisthana chakra, and because it is a fiery color, that's a reddish fire color. So the light I could see from the bottom of that place. And when I was waving, um that was the time I felt like I was releasing all my, the mind had dirty. That is not good. So that dirtiness was still there in the mind, that, oh yeah, this 4 days is a dirty time. Like, it was not connected with the God, because God has given this a natural process to be cleansed. We never thought that way. I'm so thankful to you both that you have given me this opportunity to learn, to have this wisdom and knowledge about that mother, same mother we are, the children of that mother, Mary Magdalene, and we call her Gaia, then, or Sita Ma. All those are the same. Mother is mother, and I love universal mother, principal mother. Thank you so much, Lara. Thank you, Shampaji. Thank you so much. Thank you so much. You've been sharing so important things with us, and that's exactly the thing with the moon blood you mentioned, with feeling dirty. Yes. So in the beginning, I've been talking about the moon blood as the sacred medicine of ancient times. So we have to that only patriarchy has the wrong stories, and you can decide which you want to believe, and you can change it in your life. And just rethinking, and what I said with the mantra is, I unfold myself, I unstructure myself, I unbind myself, because there were so many bindings in old times through rituals all over the world, in all traditions, to women, to their moon blood, because it was the most high frequent medicine we had from our body. And this every month with the moon goddess. So to understand
why patriarchy said we would be dirty during the moon blood is the other way around totally, because the moon blood is high frequent, and once the woman is bleeding, she is so sacred, so holy and so divine that no one should be allowed to touch her, not because she's dirty, because the contrary, because she's so holy, and she shall keep that. She's representing the goddess in that moment. So she should use this energy for creation. And then no other human that is not that high frequent should touch this goddess. So if you can turn that around in your mind by circling your hips left-wise and just deleting this old pattern and belief system, then you can fully go up in this and say, I am holy, I'm sacred, I'm free, I'm the mother. You are, what kind of names you give to the mother, it doesn't matter, you know, but you are bleeding and you are holy. And that's it. That's so important. This is so beautiful. जैसे लारा जो बता रही हैं वो बहुत सुंदर है कि जैसे अब तक हम लोग यही जानते आए हैं कि पीरियड होना, ये जो 4 दिन है, ये जैसे अभी बता रही थी इंदिरा जी कि बहुत शर्म की बात है, बहुत गंदा है, इस तरह से गलत किया गया है। पर एक्चुअल में जो चीज थी ये पैट्रियार्की था। आप कुरानों में भी पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स में भी मैं पढ़ रही थी, उसमें भी ये दिया हुआ है कि जब पीरियड्स होते हैं तो हमारा शरीर इतना ज्यादा पवित्र हो जाता है, इतना होली हो जाता है, यानी इतना सुंदर पवित्र होता है और इतनी ज्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी इतनी हाई। अब आप खुद सोचे कि एक नई संतति, एक नई तैयारी के लिए जो ऊर्जा हो रही है वो गलत कहाँ से हो सकती है? वो इतनी पवित्र है कि उसको छूना नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर किस तरह की थॉट है नहीं पता। तो कहाँ तो हम एकदम पवित्र हैं, वहां उसका उल्टा बताया गया है। तो इसीलिए लारा बता रही हैं कि आपको क्या करना है, अपने आप को बाईं तरफ से पूरे पेट से नीचे, जैसे धरती से अपने घुटनों को लगाते हुए अपने पैर को, जब आप पूरी तरह से बाईं तरफ से ऐसे घूमते हुए जब आप कर रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, जो पुराने मैंने अपने शरीरों में जो बांध के रखा है कि मैं अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही हूं, मैं उसे खोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं हम अपने आप को? अफर्मेशन क्या दे रहे हैं? मैं अपने आप को खोल रही हूँ, जो मैंने अपने आप को बांधा है उससे मैं अपने आप को खोल रही हूँ। और खोलते हुए अपने पूरे हाथों को फैला दिया। क्या किया कि मैं वही ट्री ऑफ लाइफ, वही मैं माँ हूँ, वही परम देवी हूँ, उसी शक्ति में हमें आना है। ये बात हमें बता रही है और ऐसा हमें करना है। और इन्होंने एक चीज और भी बताया है कि रोजमर्रे में भी किसी भी काम में अगर आपको लगता है कि आपको दबाया जा रहा है, आपको कम लग रहा है, तो भी आप ये चीज एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है, हमारा दबाव जो है वो फेमिनिटी के लिए आ जाता है कि हम औरतें हैं इसलिए हमें दबाया जा रहा है। जब आप इस तरह से करेंगे तब आप एकदम शक्ति में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। यस गंगा जी, अनम्यूट कीजिए। You can hear. Okay. Koti naman. Huge gratitude. Both you, Champa ma'am and Lara ma'am. Koti naman. My today's experience is so kind of very powerful. जो मैंने whole life express नहीं कर पा रही थी मेरा, वो आस्ते आस्ते निकल रहा है अभी। मेरा तो ऐसे कुछ भी, वो तो ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने, हमारे ग्रैंड मदर ट्रेडिशनली हमको कैप्चर करके रख दिया था। वो तो ट्रेडिशनल है ही है, उसको तो कंप्लेन किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैंने आज जब हमारी वो एक्सरसाइज लारा माँ करा रही थी, उस टाइम में मैंने अपने आप को ऐसे सरेंडर कर दिया और मैंने अपने आप को होल लाइफ में मुझे दबा दिया गया है। लोगों ने इतने दबा दिया, लोगों ने, जितने लोग को मैं अपना समझती हूँ, सबको मैं प्यार देती हूँ, उन लोग ने मुझे दबा दिया। मेरे जितने भी एक्सप्रेशन थी वो नहीं निकाल पा रही थी, इतने संकुचित भावना से दब गई थी मैं, वो निकल रही थी मेरे से। इतने बर्फ आ गए, इतना बर्फ आ गया, अभी तक आ रही है मेरी ये, जब पेट में अभी वो मरोड़ हो रही है, अभी तक बर्फ आ रही है,
वो निकल रहा है, बहुत पावरफुल है। थैंक यू। जितने भी थैंक यू कहूँ वो तो कम ही है। ह्यूज ग्रेटिट्यूड। थैंक यू लारा माँ, थैंक यू संपा मैम। So Providing. Ganga ji is telling that throughout her life she is being subdued, she is being crushed. Even she said that even though the grandmas and all they were carrying forward the tradition, but even those whom I considered my own, they also suppressed her. So when she was moving in this, she just felt that a lot of release is happening, and constant burping was happening, and she's feeling a lot of freedom in her body. She's really grateful for all this. Thank you. Yes, Rachana ji, unmute कीजिए. Yes, Ganga ji, आप कुछ बता रही हैं. Can I have this YouTube video that I can keep doing it, this practice until I release all of my suppression, all of my this suppression, all my pressure. So आज आपने देखा ना गंगा जी किस तरह से है. कल हम लोग एक बार और आपको दिखाएंगे. वीडियोस जो है वो बाद में ये हो जाने के बाद शायद आपको मिलेंगी. तो ये भी हम लोग पूरी देवी सर्कल टीम के साथ कनेक्ट करके आपको बता देंगे. जैसे हमने देखा बहुत ही आसान है. कैसे हम लोगों ने अपने घुटने के बल वज्रासन जैसे में बैठ सकते हैं या जमीन पे बैठ सकते हैं धरती माँ से कनेक्ट करते हुए, और अपने कमर से लेकर बाईं तरफ से हमने घूमना है और धीरे धीरे अपने आप को बताते जाना है कि मैं अपने आप को खोल रही हूँ. दोनों हाथों को फैला के पूरे अपने आप को जैसे ट्री ऑफ लाइफ की तरफ खोल देना है. वीडियोस मिलेंगे आपको, पर अभी आप इस तरह से करें. थैंक यू. नमस्कार मैम, नमस्कार लारा मैम. मैम बहुत अच्छा प्रोसेस था, मतलब अनबिलीवेबल की लाइफ में, मतलब शुरू से लेकर जब से पीरियड स्टार्ट हुए तब से एक्चुअल में जो भी इंदिरा जी ने और अद्वैता क्या नाम है उनका, सॉरी मैं भूल गई, उन्होंने बोला तो सब एक्चुअल में इतने तो इश्यूज रहे ही हैं कि कभी इस चीज को हाथ नहीं लगाना, कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाना, अलग से बैठो, अपनी शीट अलग रखो, अपने बर्तन अलग रखो. और ये प्रोसेस करके इतना लाइट फील हो रहा है. अभी भी स्वादिष्ठान और नेवल चक्र में अभी भी पूरी वाइब्रेशन फील हो रही है. अमेजिंग मैम, अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Wonderful, Rachna ji. So basically, she is also saying that the same connect and all, but now she is feeling really relieved and thankful. So, yes, Usha Paul ji, you can unmute. Hello, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lara, ma'am. हाँ मैम, मेरे को तो कल ही जैसे हमने किया था ना, उसी में इतने प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस मेरे को कल हो गया. इतनी और इतने उससे ज्यादा हुआ था, आज से भी ज्यादा कल स्पीड तेज थी. और मैं कह रही सोच रही थी कि हैंड्स वगैरह की मूवमेंट कभी मैंने ऐसे नहीं हुई है. इतनी बार साधना करते हैं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ जो मैंने कल एक्सपीरियंस किया था. सेम, बहुत ज्यादा हाई उसमें एनर्जी में सब अपना हो गया. और आज भी अपना बहुत अच्छा रहा एनर्जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. मैं हैरान थी, मैंने कहा ऐसे मूवमेंट्स कल कैसे हो रहे हैं, आज मेरे को पता ही नहीं चला था. हैंड्स मेरे ऐसे मूव हो रहे थे जैसे आज लारा मैम कर रही थी, सेम ऐसे ही हो रहा था. कल भी इतनी एनर्जी थी. हाँ जी, हाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू लारा मैम. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड. लव यू. थैंक यू सो मच. She's telling that yesterday we had a small introduction about today's workshop. So she said that she was experiencing this type of movement yesterday only. So she was wondering that I had been meditating for so long, but my body never rotated like this. And when I saw Lara ma'am doing all this, then I understood, oh, this happened. It started happening from yesterday only. Beautiful, thank you. Yeah, Anshul ji, unmute कीजिए. हेलो हेलो शंपा मैम.
Hello. Hello, Tara ma'am. First of all, thank you so much for this session. I don't know what to speak, but since childhood, I never thought guilty or blame or anything about periods. क्योंकि कभी हमें तो ऐसा नहीं feel कराया कि like we are separated. But yes, after my marriage and after my first delivery, I have gone through 2 miscarriages. From that time, I felt very guilty. और वो डर like very मतलब I was लाइक कि बहुत डर बैठ गया था और लाइक पूरा लाइक फील लाइक कि दबा हुआ एंड एवरी टाइम आई फील वेरी डर्टी और लाइक प्रेशर था पूरा बट टुडे नाउ आई एम 3 months प्रेग्नेंट बट स्टिल कहीं ना कहीं वो डर था बट आफ्टर दिस एक्सरसाइज व्हेन आई ओपन माय आर्म्स लॉट ऑफ प्रेशर एंड वेरी लाइक बहुत पेन था हैंड्स में बट द लोअर बॉडी फील वेरी लाइट and all the pressure and energy I can still feel in my hands. More the gas was released, burpee were come, yawning was released, but still I can feel the energy in my shoulder till hands. What to say? Thank you. uh, what I'm feeling right now, I can't say. What is it? So now the divine child is coming. So Yeah. just connect with your divinity. Yes, ma'am. Wonderful, wonderful. Thank you, ma'am. Thank you so much. Always Okay. love you, Champa, ma'am. Love you, I can Congratulations. always connect with you and with your blessings with me always. Thank you, ma'am, so much. Thank you so much. कितना सारा पेन लेके हम लोग सब घूम रहे हैं इसीलिए अब तो निकलना है यस डॉक्टर नीलम अनम्यूट कीजिए Today was a amazing process which you taught us. It was wonderful. Thanks a lot. And just as we learned today about the sacredness of the moon blood, my question is, what is the spiritual significance of menopause? The menopause, I think, part of this transition time is what I mentioned in the beginning. We have the trinity, the whole side of the woman's body, the white, the red, the black colors. So once we leave the field of the red goddess and we stop bleeding, we become the black goddess, which is very important for the last part of our mission in one life, to really be ready for the total transformation and to step out of the body into a new incarnation. So for this, the black goddess is very important. And the black goddess has been isolated from society and from the world for a long time. And so women are afraid unconsciously. They are afraid of stepping into the black goddess because we were told then we're gonna be old and ugly and, you know, with the red goddess we are dirty, with the black goddess we are ugly. So you can choose which of the terrible goddesses you wanna be. So, and this creates in ourselves a lot of stress and also resistance. You are unconsciously resisting to move into the highest position of the goddesses, which is the black one. The black one is the wise one, which is above all, and she's the one able to transform into nothingness. But to do this, to really be able to do it, you have to live your life fully as the red goddess. And this is the point of menopause. The big drama, I'd say, for the menopause is that if you haven't lived your life fully ecstatically, full of joy and ease and divine source in your red time, you can have a most terrible menopause. I call it transition time. So the transition time is always, we have 2 transition times, but society is focusing only on the menopause. You know, I mentioned the Holy Trinity, but I mentioned there is the 4th and 5th dimension. 4th is the moon, and the 4th is the moon, and the 5th is the sun. So we have a transition time from the white to the red goddess, because a young girl that is not bleeding is not immediately a woman with full sexual power. Never, ever. She has to make experience. She has to get into it.
And this is the transition time between the white and the red, which is, we call it also the pink or the silver one. But then we have the other transition time, and it's a mirror. The way you experienced your first transition time from the pure, innocent white one to the red will, of course, affect and create your time, your second transition time, when you move from the red into the black. So it's very important to have a look on this first transition time, and of course to see, are you really fully living your red goddess? And with these two main aspects, I would say, you create yourself, no one else is creating it, then you yourself. You yourself are creating reality through your womb. And this is what we can do. If you free yourself right now, you can fully enjoy the transition time because it's fucking awesome. Let's say it like this. Okay? बहुत ही सुंदर लारा जी ने बताया। ये किस तरह से वो बता रही हैं कि देखिए हम लोग जैसे ट्रिनिटी हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से वो देवी जैसे हम लोगों का है स्वरूप, उसको समझा रही हैं कि जब तक हम लोगों का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ वो हमारा व्हाइट गॉडेस का समय है, कि जो एक इनोसेंट शरीर है, जब तक अभी पीरियड शुरू नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग जैसे मीनोपॉज को इतना बड़ा ट्रांजिशन मानते हैं, पर एक्चुअली में ट्रांजिशन बड़े सारे हैं। तो पहला क्या हुआ कि वो छोटी सी बच्ची है जिसके अंदर अभी भी पीरियड शुरू नहीं हुआ है, उसको अभी भी एक स्त्री कैसी होती है, स्त्री तत्व क्या है, जन्म देना क्या है, ये अभी तक उसने अनुभव नहीं किया है। तो वहां से वो मूव करती है रेड गॉडेस में, यानी रेड गॉडेस यानी जो अब रजस्वला है, यानी जिनको पीरियड्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपने रेड गॉडेस के समय पर जो रेड आपका आप मेंसुरेट कर रही हैं, उस वक्त का अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को सम्मान दिया है, फिर जो मीनोपॉज का स्टेट है वो है ब्लैक गॉडेस का, यानी कि देवी का आगे का स्वरूप, जहां पर वो आपको मुक्ति मार्ग में ले जाते हैं, जहां आप अपने एक जो विजडम है, जो आपके अंदर बुद्धि आ गई है, जो इतने साल आप जिए हो उसकी जो बुद्धि आ गई है, और वो ही अल्टीमेट नहीं है, उसके आगे भी 2 स्टेजेस हैं जो चंद्रमा के और सूर्य के, मतलब वो सिल्वर ऊर्जा और गोल्डन ऊर्जा में आप बदलने वाले हो। लेकिन अगर इसी बात को ही ज्यादा, मतलब आपने जो रेड गॉडेस जब तक आपका पीरियड हुआ उसी को ही आप लेके परेशान होते रहे, तो वो जो ट्रांजिशन होगा मीनोपॉज में, तब आपके अपनी ही परेशानियों की वजह से आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आएंगी। लेकिन अगर आपने उसको पूरे सम्मान से जिया है तो ये बड़े स्मूथली आप शिफ्ट कर जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने आप को पूरा सम्मान देना और उसको हर स्टेज को पूरा सम्मान देना और उसमें मूव करना, यही हम लोगों को सीखना है और इसी में आगे मूव करना है। Actually, thank you, Lara ji. It was explained very beautifully. Yes, yes, Hasini ji, you want to share? Please unmute. Hi, can you hear me? Yes, yes. I just want to thank you both for the wonderful session. As everybody's, few of them said about the periods, I bleed a lot. For last 3 days, I bleed a lot. I was about to faint. That much it was heavy. So when I was doing the meditation today, I wasn't sure if I can even sit. I sat down, and during the meditation, like with these poses in the uterus, I felt something is going on, and some kind of discomfort in the beginning. And then I felt a rush of energy and a rush of blood was coming out. So what does that mean? Like, does that mean I released something? Or, I mean, I feel the good energy, and I saw a white clear light as well, like a blue color light and then a white color. So I saw some colors and it was clear, and I could feel the energies too. So just want to know the discomfort and stuff. Okay, thank you for sharing. That's very important. Great that you've been mentioning this. So you can do this exercise, especially when you're bleeding. And if you bleed a lot and strongly, it's a sign, a symbol that you have a lot of toxins in your body, especially in your womb. So the moon blood has also
purity effect that you clean out everything. But if it's very strong and a lot bleeding, means that you are keeping too much stress in your cells. And this is the body showing you to release it. So while you do this exercise, there's an old tradition that women would, when they were bleeding, they would do this exercise, of course, in nature, together with other women, because this is making you strong, being together with your sisters who are bleeding, knowing that you are not dirty, that you are holy and sacred. And then you would bleed into a hole of Mother Earth. You would make a ground, like a little hole in the ground, and you would bleed into it, and the whole blood would take the shame and the blame and the toxins out of your womb. So this is a nice ritual. You can try to do it also at home with a bowl where you really sit in front of it, and this is a very first beginning of letting go of all kind of traumas and being, attached to some negative emotions. So really trying to release it and seeing it as a huge healing. So it's a good one. You can really do it when you're bleeding. Awesome. Thank you so much. And one more question is, like, we turn in the anti-clockwise, right? Correct? From Yes. left to right is anti-clockwise. Yeah, exactly. So left turning is the one to release and to dissolve something, while that's how we do it with the red goddess. Like when she's going up, she's really creating something up, and the left wise is going deep down. So while you're doing the left turning with your hips and your belly, you ground more and more into Mother Earth. You become one with your roots. And when you're bleeding, it's very important to strengthen your roots. Awesome. Thank you so much. Thank you so much again. लहरा जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और बताई कि जैसे किसी का बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने यूट्रस में अपना काफी ज्यादा शेम और वो कुछ बांध के रखा है। तो ये सारा क्या कर रहा है कि ज्यादा आपको साफ करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ये कह रही हैं कि पुराने समय में जो एक्चुअल में ये हीलिंग का प्रोसेस होता था, वो क्या करते थे कि जमीन में एक गड्ढा सा बनाकर वहां पर इस तरह के मूवमेंट करती थी। जैसे अभी हसीनी जी बता रही थी कि उनको ऐसा लगा कि जैसे कुछ नीचे फ्लो हुआ, तो वो गड्ढे में वो पूरा जो ब्लड जा रहा है उसको सीधा वहीं पे निकाल दिया। अपना सारा शर्म, सारा दुख, सारा पेन जो है वो धरती माँ को दे दिया और अपने आप को बिल्कुल उस पवित्रता में लेके आ गए। तो अगर आपको बाहर जाके करने में दिक्कत है तो एक कटोरी लेके भी आप ये चीज कर सकते हो। पीरियड में भी ये काम किया जा सकता है। जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन था उसमें ये सारी चीजें होती थी। आज के समय पर हम लोगों को ये बातें जो है बड़ी अजीब सी लग सकती हैं, पर ये सारे प्रोसेस पहले भी हुए हैं। और उस वक्त की जो औरतें हैं वो बहुत ही स्वस्थ थी और बहुत सुंदर उज्जवल आगे वंशों को वो लेके आ रही थी और खुद भी बहुत खुश रहती। Yes, Kusum ji, unmute कीजिए। So Lara, there is another question in the question group. Yes, Kusum ji. आत्मवंदन मैम। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी मैम, मेरा एक्चुअली जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिल गया है। मुझे ये पूछना था कि हम डेली कर सकते हैं कि नहीं। yes. तो वो मुझे, हाँ जी। और दूसरा मैम, अगर वज्रासन में ना बैठ सके तो फिर कोई और फैला के बैठ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए, उस तरह से बैठिए। मतलब आपका जो कमर है, हिप है, वो जमीन है, लेकिन वो मूवमेंट भी हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को आपको उठाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है मैम। इसमें जो अभी एक्सपीरियंस में मुझे कोई गिल्ट विल्ट नहीं था अपनी पीरियड को लेके कभी भी। मैं क्लास 9th में थी जब मेरी मदर ने मुझे कहा, एक देवी के टेम्पल हमारे यहाँ पे ज्वाला जी और कांगड़ा देवी का मंदिर है, तो मुझे वहां पे जाना था। तो मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें पीरियड आए तो तुमने नहीं जाना है, माता रानी की शायद इच्छा नहीं है तुम्हें मंदिर में बुलाने की। तो मैं जबरदस्ती चली गई कि नहीं मुझे जाना है, और मैं मत्था टेक के आई, दर्शन करके आई, और मैं माता रानी को कह के आई कि अगर तुम्हें पीरियड आते हैं, मुझे पीरियड आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से शायद ऐसा कुछ गिल्ट रहा नहीं। लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे मतलब एबॉर्शन बहुत हुए,
तो मैं इसीलिए यहाँ पे थी। और जब ये हम कर रहे थे तो मेरे राइट साइड में जैसे पेन हुआ, लेकिन वो पेन कुछ अजीब था, जैसे कि होता है ना एक आयरन रोड रहता है, तो ऐसे लगा कि कुछ मसल्स ऐसी हैं जो आयरन रोड की तरह हो गई हैं और बहुत पेन कर रही है। वो सिर्फ राइट साइड में हुआ ऐसा ना, बाकी तो ठीक ही रहा। बाकी ऐसा था कि जब मैं, आप कह रहे थे कि इमोशन कुछ आ रहे हैं, फील कुछ गिल्ट, एंगर, तो वैसे तो कोई पास्ट का एंगर आया नहीं, लेकिन हाँ मतलब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि आज मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो थोड़ा शोर मत करना। तो जब वो कह रहे तो अचानक से बाहर से सब लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया, पर वो मैंने निकाल दिया फिर। तो बस यही था। बाकी थैंक यू आपका और मैम का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। तो मास्टर्स अभी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, पर अभी हम लोग 2 दिन और जुड़ेंगे, तो ये जैसे रिलेशन का है और स्कैंटी का है, ये सारे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, बिल्कुल मत घबराइए। यस संगीता जी। Thank you, Shampa ma'am. Thank you, Lara ji. Thanks a lot. I think this session has aligned the feminine energies without which no creation is possible. And ma'am, I was having a lot of pain since 2 days, and I was thinking that a lot of new energies are coming, so the stuck energies are being removed. After the session, I think it has helped me in balancing the feminine and the masculine energy. And shall we do this exercise daily? And it is connected with the earth and the heaven. And ma'am, can you guide us that shall we do it daily? And how to increase the feminine energy? So Sangeeta ji, we will be doing this just like the day we did today, and then we will be doing something more tomorrow. So it is day wise we will be proceeding, so you can observe. And by the third day, it will be very clear that what all you can do daily and how it should proceed, right? Thank you, ma'am. Thanks a lot. Provide simple exercises, and it will be, tomorrow we'll do some others to really build up this energy again, to really align everything and balance left and right side, divine masculine and feminine side of us, but also above and below, and to really return to the core, to the womb place where you can create. So really important for today. The lesson for today was really to really change maybe belief systems or any patterns you have of production, that you are not a factory with a woman's body. You're not a factory that is producing anything that you don't want to. You can if you like, but the most thing why we are here is we are representing the goddess on earth who is creating everything. Birthing and dying process, like everything in between. So this is it for today. We are the creators and not producers. That's very important, because with this you can release a lot of stress. With this little exercise you can do daily, of course, but there will be some few more coming tomorrow and the day after. So for today, the most important thing is to reconnect with your moon blood, to reconnect with the sound of the goddess, the core sound, the rhythm of your womb, to find back to this rhythm, your own rhythm. It's not the rhythm of the clock. The clock was also invented by man. Very important thing, you have your own rhythm in your body, and it's coming from the womb. So yeah, go back there and find your power, your source, your health, your everything. So producing is the past and creating is the now. And the moon blood is always there. Okay. Thank you. Thank you. Beautiful. Actually, there is a Misha who is like very much worried that if the partner's sexual desire is like too much and you don't want to participate, what is to be done? She is regularly asking this question because this becomes painful. So, Can you, Shampa, sorry, can you repeat it? Yeah, she is asking that if the partner demands sex and you are not very much into it, so it is very painful. So what to do with that situation? Well, this is also that's a very common situation for many women in the world.
And of course, it has to do with also with the same core, with shame, blame, and everything, that we are seen and made as a factory that is just producing and giving something, you know. But it's very important to find back to your core and to really feel. If you feel your rhythm, you also feel your sensuality, and you feel when it's time for you to connect with your partner or not, or to do whatever you want to do. It's very special. The sexual part has to be like the bleeding part, that women really have to feel it. They have to feel it inside of them, this longing and this wish to connect with someone in a divine union. And if this is not happening, at the moment it is painful, it is not right, it's not healthy, and it's toxic. And the thing is, even if you just do it, it will be saved as a memory in your womb. And this is going to make you sick if you collect more of these painful situations. So it's up to you to really, as I said in the mantra, that's really useful, is like, I unwind myself, I unbind myself in this case, because every partner that really loves you will accept a no and will agree with the goddess, because with dancing, the man is leading the dance, but with sexuality, the goddess is leading sexuality. Yes. And following and serving the goddess. And if this is the other way around, it is unhealthy. So बहुत इम्पोर्टेंट बात लारा जी ने बताई है, और ये हम सबको समझना है कि जब हम बंधे से होते हैं, कभी भी ये जो, जैसे हम लोग का जो पीरियड्स होता है, जैसे हम एक फील करते हैं कि हमारे से हो रहा है, इसी तरह से जो सेक्स का है वो क्या है, ये सेक्रेड है, ये भी एक पवित्र चीज है, और इसे हमें अपने अंदर तक इसको महसूस करना है। लेकिन अगर वो महसूस खुशी ना देकर दर्द दे रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये सारी मेमोरी को पकड़ता है। हमारा जो यूट्रस है, हमारा जो वूम है, वो सारी इन मेमोरीज को पकड़ता है, और वो हम लोगों को बांधता है और आगे के लिए भी कष्ट तैयार करता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह का कोई भी रिलेशन में रोकना है। और इसीलिए जो वो बता रही हैं कि हम लोग जैसे अपने आप को घूम रहे हैं और बोल क्या रहे हैं कि मैं अपने आप को अनवाइंड कर रही हूँ, अपने आप को अनबाइंड कर रही हूँ, यानी अपने आप को खोल रही हूँ, और अपने आप को जो बंधा हुआ है उसको भी मैं पूरी तरह से खुल रही हूँ। तो जब हम अपने आप को खोलेंगे, ये दो चीजें हैं, अगर आप खुले नहीं हो, अपने आप में रिस्ट्रिक्टेड हो, तब आप एंजॉय नहीं कर पाओ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसीलिए ये जरूरी है। और जब आप उस तरह से खुले हुए हो और एकदम आराम से हो, तब शायद आपके पार्टनर का वही सम्मान के साथ अगर वो आपके पास आते हैं, तब आप उसको एंजॉय कर पाओगे। लेकिन आप प्रोडक्शन मशीन नहीं हो, ये चीज को आपको समझना है और अपने आप को पूरा सम्मान देना है। जब तक आप खुद को नहीं सम्मान दोगे, आप इस पूरे प्रोसेस को मजा नहीं ले पाओगे। और ये एक एग्जैक्टली मजे से ज्यादा एक को क्रिएशन है, साथ में मिलके है। तो जब हम दर्द में रहेंगे तब हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। मीशा जी, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अंदर का जो दर्द है उसको निकालना है, अनवाइंड करना है, अनबाइंड करना है, पूरे तरह से अपने आप को खोलना है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात यह है कि डांस जब होता है तो जो मेल है वो बुलाता है, फीमेल को अपने पास बुलाता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है हमारे सेक्स की, उसमें शक्ति जो है वो शिव को बुलाती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इस तरह से होना चाहिए। और शक्ति शिव को सिखाती भी है। इनफैक्ट अगर हमारे अपने स्क्रिप्चर्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरी देवी जो है वो सिखाती हैं कि मुझे इस तरह से पसंद है, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत ही डिवाइन चीजें हैं, हमें इनको समझना है। और उसी तरह से जब हम बढ़ेंगे तो ये जो एक हम लोगों ने बड़ा शर्म और दर्द से हमने जो अपने आप को बांध रखा है, इसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। मास्टर 10:30 बज रहे हैं, मैं एक शेयरिंग और ले लेती हूँ। सेजल जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते संपा मैम, नमस्ते लारा जी। यू बोथ लुक सो ब्यूटीफुल, सो डिवाइन। देवी लग रहे हो, लाइक आप लोगों ने हमको भी देवी बना दिया है, और वी आर डिवाइन, वी आर देवी। यस मैम। और बचपन से मैम मेरा जब आई वाज जस्ट 12 years old, I started my period, first period, and from very first day I used to had lots of pain, and
that continued till my last period. So after my marriage, I was not conceiving. So we did lots of tests and all, and then we found out that I had endometriosis. And with endometriosis, I cannot conceive. And if babies, if at all by chance, if that happens, then baby won't be like healthy. Something like that, doctor told us. So, and then another thing is that, ma'am, that when I was 21 years old, I lost my mother. And when I got married, that time my age was 24. In between what happened, my mother-in-law said that since I have two sister-in-law and she did delivery to both the sisters and all, but in my time, my sweet mother-in-law said, "Okay, I won't be doing your delivery and all." So as it is, I have lost my mother. And then she said this sentence. So I was so much taken aback that inside of me, I thought I won't be having any baby. So where do I go? Where do I go? Whom do I call for these things? So I have one sister only. She's smaller than me. And she was also not married. And so all by myself I was. Since I lost my mother and all, and that pain was there, so that I won't be having baby. Eventually what happened, ma'am, all those period I was taking lots of pills and all. So my life, I was just pulling, and one fine day, 2011, I had to remove my uterus, hysterectomy. And मैम आपको पता है मेरा आर्थराइटिस का इश्यू है एंड इमोशनल इश्यू है. सो मैम कुछ ऐसा है कि मेरे आर्थराइटिस मेरे ये सब इश्यू से कनेक्टेड है. Will you please convey this, or will you please answer? It is all connected. These are all connected. So मैंने इतना दर्द ले लिया है अपने आप कि वो मेरी एक सासू माँ, स्वीट सासू माँ के एक सेंटेंस से मैंने पूरा मेरा पूरा मैंने जैसे खत्म कर दिया अपने आप. ऐसा हो गया. हो सकता है ऐसा? हो सकता है. आप लोग हम लोग सब क्रिएटर्स हैं. हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं. पर अपने आप को आप माफ करते चलिए और अपने आप को अभी भी जो आपके अंदर की जो वुमन है उसको पूरा सम्मान दीजिए, फिर ठीक होगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. There are some questions from those who are unmarried, if they can do this process. So this is for everyone, my dear. तो यहाँ तो ये पूरा आपको व्हाइट गॉडेस से रेड गॉडेस से ब्लैक गॉडेस और फिर आपके चंद्रमा की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा तक आप जा रहे हो. तो अनमैरिड भी इसको कर सकते हैं. और बेसिकली आप जब पार्टनर के साथ है तभी आप को ये सब होता है, शोभा देता, ऐसा नहीं है. बस आप वुमेन हो, अपनी फेमिनिटी को आपने पूरा सम्मान देना है. So having a proper period and having a full beautiful body doesn't mean that you need to be married. Even if you are single, even if you don't have a partner, you need to honor your feminine body fully. You are the goddess. Remember that. So don't dishonor by thinking that only the married women should be doing this. No, no, it's not like that. You are the goddess. Just honor your goddess. And then only you will proceed and honor yourself, and then only you will invite the Shiva in your life. So irregular periods and all, जैसे अभी सेजल जी का अभी आप सुन रहे थे, हम अपने लिए ही क्रिएट कर रहे होते हैं. यही जो ब्लेम रहता है, हम लोग अपने ऊपर जो सारी गलत अपने बारे में बताते रहते हैं. हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि जैसे अभी एक किसी का भी मैसेज था. There is one message that says that one girl, she is so very tormented about her own body, that it is so dirty. She menstruates either once in a year or 6 monthly, that too after taking medicine. So it is like a full blame to the body. तो अपने आप को आपने छोड़ना है, खोलना है, अपने आप को पूरा सम्मान देना है. ये जो एक्चुअल में जो प्रोसेसेस थी वो देवी को अपने शरीर को जो देवी का स्वरूप है उसमें पूरा लाना है. देवी बाहर नहीं है, देवी आपके अंदर है. हर तरह से हम लोग यही बात को बताना चाह रहे हैं. इसको आप लाइए.
पूरे तरह से सम्मान अपने लिए लाइए और हम लोग कल भी मिलेंगे। कल मिल के हम लोग आगे का बढ़ते हैं। पूरा सम्मान अपने लिए लाइए, एक्सरसाइज आप करें, सभी समय पे जुड़े, क्योंकि समय पे जुड़ना भी आपको अपने आप को आप सम्मान दे रहे हो। So yes, we can meet tomorrow, isn't it? So are we do a closing? Yeah, we can close, yes. Although there are some raised hands, but we can talk tomorrow also. We will answer much more than tomorrow and the next day, but I would like to finish with this, again, repeating for ourselves the reconnection to our moon blood, to really rewind, rebind, restructure yourself, and to also take this into your sleep tonight and see what comes up in your dreams, how your body feels with this. And there is another big thing that we will go into tomorrow, which will be the balancing of the divine masculine and feminine inside of us, because the moon blood builds up a trinity in the body, as we say, as the high priestess is teaching. We have the red organs, the heart is pumping the blood, which is not the moon blood, yeah, but it's pumping the blood, and that's the heart is the center of, we know it, you know. But there is these two other organs, and that's very important now for tomorrow, is to focus a little bit, you can take it into your sleep, is the left and the right side holding the womb, so to speak, is the liver and the spleen. And the liver is on the right side, and the spleen is on the left side. So maybe you can now put your hands on there. It's right beyond, you know, your bones. There starts is the liver and the spleen. So both are important and relevant to the whole moon blood and to the whole creation in the womb. So we will be more into this tomorrow and try to balance and get these two together. And the issue around this, because patriarchy really managed to separate us from the moon blood and from the holy medicine, but it also separated us from the divine masculine inside of us. And this is a very important topic for us women, not feeling, and that's the main thing for tomorrow, is not feeling safe. Women are not feeling safe with their sexuality. And that's if you don't feel safe with what is holy, you feel dirty, guilty, blame, shame, something. You feel wrong. And then the whole thing starts to work. It's a really, that's like a factory. So if we can feel into it tonight, an exercise that you can take into your sleep, that you feel into your body after the exercises we did. You can also repeat this exercise before you go to sleep. And then you take this in and you connect with the liver on the right hand side and the spleen on the left hand side. And you feel like they are two guardians of your womb, of the organ of creation. If you feel any lack in it, if you feel abundance, what do you observe feeling your organs there? They're both very important for the moon blood. And if there is an imbalance, we will work on this tomorrow. So this is an important thing. What do you need to feel safe? यस मास्टर्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग को करना है, जो होमवर्क है वो है कि हम लोगों का ये जो पुरुष प्रधान समाज है, उसने हमारे अंदर, हर वुमेन के अंदर एक जो परम पुरुष तत्व है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उसको हम लोगों को अपने अंदर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कि हम सेफ नहीं है, हमें अपने लिए डर लगता है। तो इसका कल बैलेंस हम लोग करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, आज रात को हम जैसे रात को सोएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सेम एक्सरसाइज हम एक बार करेंगे। और फिर किस तरह करेंगे कि जैसे हम दिल के साथ जुड़ेंगे। जो दिल है, हमें पता है दिल क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, लेकिन मून ब्लड जो है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, वो अलग है। तो उनके साथ हम लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं कि हमारे जो दाहिनी तरफ है, दाहिनी तरफ अगर हम लोग हाथ रखते हैं पेट के ऊपर,
तो जो हमारा डायफ्राम है, जो हमारे पिंजर है, उसके जस्ट नीचे वहाँ हमारा लिवर है, और बाईं तरफ अगर हम हाथ रखते हैं वहां पर हमारा स्प्लीन है। ये दोनों जैसे गार्ड के तरह हैं, हमारे वूम को रक्षक, हमारे गर्भ के रक्षक के तरह हैं। तो उनको हाथ रख के हम लोगों ने दोनों के अंदर जैसे एक बैलेंस के तरह लाना है, और कल हम लोग फर्दर इस पर काम। तो आप लोग सभी इस चीज को करें। और एक और बात है मास्टर्स, अभी मैं देख रही हूँ कि 139 लोग रह गए हैं, क्योंकि शुरू हम लोगों ने किया था 300 प्लस में, नियरली 400 तक थे। तो एक चीज सभी मास्टर्स के लिए है, और मैं देवी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो होमवर्क है वो भी डाल दें। और शेयरिंग हो रही है, तो चलिए अभी हो गया है, हम लोग निकलते हैं, ये वाली बात ना रखें, क्योंकि शेयरिंग में ऐसे कई प्रश्न आएंगे जो आपके कई तरह के डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगर अपने आप को आप सम्मान देने के लिए उतरे हो तो पूरा सम्मान दीजिए। 2 घंटे आपके अपने, बिल्कुल आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा अपना समय, अपने पूरे जो स्त्री तत्व है उसको सम्मान का समय, अपने देवी के शक्ति का, अपने उसकी आराधना का समय, तो बीच के बिल्कुल बीच में नहीं जाएंगे। और अपने साथ पूरा, क्योंकि आज तो इन्होंने ऐसे बीच में रोका है, पर हम लोगों का कई बार हो सकता है लास्ट में हम लोग कुछ और एंडिंग के लिए मेडिटेशन करें, तो अगर आप बीच में चले जाएंगे तो वो आप मिस कर जाएंगे। तो ऐसा ना करें, पूरे समय पर रहें। और इस तरह से हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे। आज ये सारा होमवर्क आप लोग जरूर करें। थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट टुमारो, कल मिलते हैं हम सभी, और बिल्कुल समय पर 8:30 बजे जुड़ जाएंगे। थैंक यू। Thank you everyone, all goddesses who have joined to feel their goddesshood. सभी देवियों को जिन्होंने अपने देवी तत्व को पूरी तरह जानने के लिए आज वो जुड़े, उन सबको मेरा दिल से प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।